Hello aspirants, welcome to CSAT FIT course. This is class 30 of CSAT FIT. In this class, we are going to deal with percentage concept. This is part 3 of percentage. If you haven't watched part 1 and part 2, please watch part 1 and part 2 and then only watch part 3. So in this class, we are going to discuss about percentage questions based on successive percentage change, that is successive percentage change. So if we see in UPSC CSAT PYQs on this topic, that is successive percentage change, say in 2014 there is one question, and in 2021 there is one question, and in 2022 one question is asked from successive percentage change. See, these questions are very easy questions. So in this class we will discuss basic concept of successive percentage, and then we will discuss various types of questions which can be asked from successive percentage change, and then we will discuss these PYQs along with questions asked in SSC CGL from this topic. Okay, so let's first understand the basics. Okay, so let's first briefly understand few concepts, okay, which will be used in this class. That is, see, when we talk about say one dimension, okay, one dimension, okay, so one dimension or 1D is 1D is, then in one dimension there is only centimeter to the power 1 or meter to the power 1 or kilometer to the power 1. See, that is, in one dimension we only measure about length. We only measure about length. See, example of one dimension are, ठीक है, वन डायमेंशन में किन किन चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन होता है ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इन वन डायमेंशन. एग्जाम्पल इज, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ए टू बी. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी. सो दैट डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इज लेंथ. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. सी, दिस इज लाइक से ए and this is say B. So A to B distance. So this is an example of one dimension. ठीक है, so one dimension, say this is 1 centimeter. So centimeter is what? Length. And centimeter, 1 centimeter, that is centimeter to the power 1. and अगर मीटर है तो मीटर टू दी पावर 1, and किलोमीटर है तो that is kilometer to the power 1. So if we are talking about one dimension, we will talk only about centimeter, meter, kilometer to the power 1. ठीक है, so and similarly another all the things which are measured in one dimension are, ठीक है, so one dimension में what all things we measure is, say one is length, second is breadth, ये नहीं है, breadth, and then we will measure height. ठीक है, जैसे height is also what, ठीक है, जैसे height of a person, ठीक है, that is from here to here, that is also nothing but length. ठीक है, in length में, and breadth is also what, breadth is also nothing but length type, right? So height etc. ठीक है, then radius of a circle. ठीक है, radius of circle is what, circle है, ठीक है, radius is from here to here, right? So this is radius. So radius is also nothing but length, that is r का length, that is point A to point B कितना है, ठीक है, radius is measured in one dimension. Then perimeter. So perimeter is what, so perimeter is जैसे square है, so square का this all this length is called perimeter, that is, ठीक है, ये borders का पूरा length है, that is perimeter. So that is also measured in what, say जैसे ये 1 centimeter है, ठीक है, then this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter. So perimeter of a square दिया है इस square का, so that is 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter, so that is 4 centimeters है, ठीक है. So perimeter is 4 centimeters, that is centimeter to the power 1 only. So perimeter is measured in one dimension, ठीक है, length measure कर रहा है, we are measuring length. Then similarly diagonal, ठीक
ठीक है. Diagonal is also measured in centimeter. Diagonal is what? Square का diagonal is this one, right? So this is point A, point B. उसका दोनों के बीच में distance और length we are measuring. So that is also measured in one dimension. So these are examples or things where we use one dimension. ठीक है. एक concepts हम questions में use होगा. That's why I am discussing it. Then आता है next is जैसे one dimension हो गया. Then second dimension या two dimension. Two dimension, right? So two dimension or 2D, ठीक है. So two dimension or 2D is what? So these are derived in centimeter square, meter square, comma kilometer square. ठीक है. सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर. जैसे एग्जाम्पल इज जैसे जनरली एरिया इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ठीक है. एरिया ऑफ ए triangle, area of a circle, area is measured in centimeter square. So in real life example of 2D is paper in your hand. ठीक है. जैसे A4 paper you are using, ठीक है, that is measured in is 2 dimension. ठीक है. 2 dimension. Why? It has length and breadth, it has length and breadth, but it has no height. ठीक है. that is height is very negligible, right? or near zero height. so length and breadth exist, so we can measure. जैसे paper है, so this is paper, ठीक है, it has length, ठीक है, this is length and it has breadth. so अब उसका पेपर का एरिया मेजर करना है. ठीक है. जैसे लेंथ एंड ब्रेथ है, सो एरिया मेजर करना है. सो वी विल टेक दिस वन, एंटायर दिस फील्ड इज एरिया. ठीक है. एंड उसका हाइट नहीं है. ठीक है. सो दैट इज 2 डायमेंशन. एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशन. देन नेक्स्ट इज 3 डायमेंशन. ठीक है. सो 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. सो 3 डायमेंशन that is 3D. so 3 dimension में we talk about what? we talk about volume. ठीक है. 3 dimension we talk about volume and we talk in centimeter to the power cube, meter to the power cube, etc. ठीक है. ठीक है. so that is volume. example of 3 dimension is जैसे a bucket. ठीक है. bucket has a volume, it has length, it has breadth and it has height also. ठीक है. length, breadth and height. so a bucket, so volume is amount of water you pour in the bucket. so the पूरा bucket भर दिया तो volume is filled. so that is volume, a 3 dimension thing. okay. so these are the basics we need to understand. now let's discuss about the square and उसका percentage change. ठीक है. so it's let's put its heading, that is square. so this is for example purpose. ठीक है. like to make you understand कि क्वेश्चन में हम क्यों यूज करते हैं. ठीक है. why we use the formula or certain kind of things we use in questions. ठीक है. तो थोड़ा बेसिक है, समझ लेते हैं. ठीक है. it will be useful in questions. so square is anything where sides are equal, right? so this is a square. ठीक है. so side, say let's take side of a square is 10 centimeter. ठीक है. 10 centimeter. now what we are doing is we increase the size of this square. ठीक है. that is side का length increase कर रहा है on 4 sides. so now this is bigger square. ठीक है. so this is bigger square where length is say 11 centimeter. ठीक है. 11 centimeter side of a square. so ये सब 10 centimeter, 10 centimeter, 10 centimeter, because in square all sides have to be equal. so now we increased 10%. ठीक है. that is side of a square is increased by 10%. ठीक है. but is 10% of 10 is what? that is 1. ठीक है. 10% of 10 is 1. so 1 increase हुआ. so 10% increase of side of a square. ठीक है. so now when we increase, so diagonal of a square, so this is diagonal. ठीक है. and a diagonal is one dimensional, right? ठीक है. so now diagonal
diagonal is formula, no need to remember these formulas, ठीक है. So diagonal is what we know कि भाई ये right angle triangle है. So if we want to know the diagonal का length, then we will use Pythagoras theorem or simply square root of 10 square plus 10 square, ठीक है. क्योंकि टू गेट दिस, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है. जैसे ए बी सी है, सो इफ वी वांट ए सी का लेंथ, देन इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है. सो बाय यूजिंग दैट वी आर गेटिंग डायगोनल. सो डायगोनल का नाउ लेंथ वुड बी दैट इज 10 रूट 2. दिस कैन बी रिटन एज 10 रूट 2. कैसे लिखेंगे, दैट इज रूट ऑफ 100 प्लस 100, ठीक है. 100 प्लस 100, 100 प्लस 100, सो दैट इज 10 स्क्वेयर 10 स्क्वेयर, दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ 200, ठीक है. स्क्वेयर रूट ऑफ 200 विच कैन बी रिटन एज स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 100, ठीक है. स्क्वेयर रूट को ओपन किया, ठीक है. देन इट वुड बी स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वेयर 10 स्क्वेयर, सो 2 रूट कैंसिल, दैट इज 10 इंटू रूट 2, 10 into root 2. So this would be the diagonal. We got the diagonal of this square. Now for this square, diagonal is again same formula, diagonal of this square. So this is square root of 11 square plus 11 square, ठीक है. बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम से 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट वुड बी 11 रूट 2, 11 रूट 2. सिमिलरली, ठीक है, डायगोनल ये इस स्क्वायर का ये हो गया. नाउ पेरीमीटर, perimeter is what? Perimeter of a square is this side, that is 10 plus 10 plus 10 plus 10, that is 40 centimeter is perimeter, right? And this for this square perimeter is 44, that is 11 plus 11 plus 11 plus 11, that is 44. 44 is the perimeter, ठीक है. Here 40 is the perimeter, right? So now one thing what we need to know is, ठीक है, ठीक है. So now see percentage wise increase in side, ठीक है. So now percentage increase in side is equal to, ठीक है, if we go for formula, percentage formula, so percentage increase in side is equal to, ठीक है. So 10 to 11 we have done, that is 10 minus 11 minus 10 is 1 by original is 10 centimeter, 1 by 10 into 100, ठीक है. that is percentage change is 10%. so अगर percentage side का change if we changed by 10%, then percentage increase in diagonal is equal to, देखो if you are not getting this now, don't worry, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. द मोमेंट वी डू क्वेश्चंस, ये सब टेक्निकल है, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स. हैव पेशेंस. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल गेट क्लैरिटी, ठीक है. सो परसेंटेज इंक्रीज इन डायगोनल इज, ठीक है. सो परसेंटेज इंक्रीज हियर इज व्हाट, ठीक है. इंक्रीज इज 11 रूट 2 माइनस 10 रूट 2, ठीक है, ठीक है. 11 रूट 2 माइनस 10 रूट 2, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज, राइट. सो दिस इज नथिंग बट रूट 2 ओनली, ठीक है. 11 रूट 2 से 10 रूट 2 माइनस कर रहे हैं तो रूट 2, सो दैट इज रूट 2, ठीक है. बाई डिवाइडेड बाई ओरिजिनल. सो ओरिजिनल इज परसेंटेज में क्या है, ठीक है, चेंज, परसेंटेज चेंज बाई ओरिजिनल चेंज इंटू 100. सो ओरिजिनल इज 10 रूट 2, ठीक है, जो ओरिजिनल लेता है इंटू 100%, ठीक है. दैट इज रूट टू गेट कैंसिल, 10 10s आर, दैट इज 10%, 10% चेंज.
सो वन थिंग वी वांट टू एस्टैब्लिश इज जैसे वन डायमेंशनल है स्क्वेयर में, दिस इज दीज आर थिंग्स आर वन डायमेंशनल बिकॉज साइड इज वन डायमेंशनल बिकॉज साइड इज लेंथ सेंटीमीटर्स में, एंड डायगोनल इज वन डायमेंशनल बिकॉज डायगोनल का लेंथ भी है वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर √2 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. देन सिमिलरली परसेंटेज increase in perimeter is equal to परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर इज, देखो इंक्रीज क्या हुआ 40 सेंटीमीटर से 44 सेंटीमीटर हुआ, सो इंक्रीज इज 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज 40 सेंटीमीटर into 100, so 4 tens are and 10 tens are, so that is 10%, 10%, ठीक है, we got 10%. So in one dimensional figures, in one dimensional things, that is length, distance, length, breadth, height, radius, perimeter, diagonal, in all these things देखो इधर side देखा diagonal and perimeter, these are one dimensional things. So whenever we make a change of 10% चेंज, जैसे साइड में इन दोनों स्क्वेयर्स में वी मेड 10% चेंज, राइट, 10% चेंज है तो डायगोनल में भी देर विल बी 10% चेंज एंड इन पेरीमीटर ऑल्सो देर विल बी 10% चेंज, ठीक है, दिस इज द थिंग ओनली वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है. सो पुट ए नोट एंड राइट, ए नोट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया कोई नहीं है, बस ये याद करना है. इफ वी change one dimension by x%, ठीक है, जैसे वन डायमेंशन इज साइड, हाइट, ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस एक्सेट्रा. इफ वी चेंज it by x%, then all the other 1D one dimension also change by same percent, that is x%, ठीक है. So if we are changing side by 10%, then other one dimensions that is perimeter, ठीक है, diagonal एक्सेट्रा, जो भी वन डायमेंशनल चीज है वो सेम परसेंट से चेंज होता है, दैट इज 10% है तो 10%, 20% है तो 20%. दिस इज द नोट. बेस्ड ऑन दिस वन नोट वी कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. अब देखते हैं, ठीक है, वी विल डू क्वेश्चंस. दैट इज क्वेश्चन इज if side of a square is increased by 10%, then find percentage increase in its perimeter and diagonal, ठीक है. so that's what we did. अब इस क्वेश्चन में क्या है, साइड का परसेंटेज ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वेयर, ठीक है, साइड ऑफ ए स्क्वेयर वी इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, इस फिगर में, ठीक है, फ्रॉम 10 to 11, ठीक है, 10% वी हैव इंक्रीज्ड, 10% ऑफ 10 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया है, ठीक है. So side of a square increased by 10%, then find percentage increase in its perimeter and diagonal, So वही है, वन डायमेंशनल है स्क्वेयर का साइड, देन पेरीमीटर इज ऑल्सो वन डायमेंशनल एंड डायगोनल इज ऑल्सो वन डायमेंशनल. जैसे स्क्वेयर है, ठीक है, दिस इज साइड 10 सेंटीमीटर्स को वी इंक्रीज 10%, ठीक है, सो 10 सेंटीमीटर्स को वी इंक्रीज 10%, सो इट बिकेम 11 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 11 सेंटीमीटर्स बन गया, ठीक है, 11 सेंटीमीटर्स हियर, 11 सेंटीमीटर्स हियर. सो देन इंक्रीज किया तो वी नो कि अगर साइड 10 सेंटीमीटर 10% इंक्रीज हुआ तो पेरीमीटर विल बी इंक्रीज बाय 10% एंड डायगोनल विल बी इंक्रीज बाय 10%. सो 10% इज द आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है. सो ए वन डायमेंशन है, ठीक है, वेन एवर दे आर आस्किंग वन डायमेंशन में 10% पेरीमीटर इज वन डायमेंशन, ठीक है, एंड डायगोनल इज वन डायमेंशन. सो सेम परसेंट 10% साइड भी वन डायमेंशन है, ठीक है, एंड साइड वन डायमेंशन में 10% एक चीज इंक्रीज किया, ठीक है, सारे चीज को भी जैसे डायगोनल है इतना से इतना हो गया, सो डायगोनल भी 10% बढ़ेगा एंड पेरीमीटर भी ये सब भी 10% बढ़ेगा, दैट इज 40 पेरीमीटर इधर है 40 सेंटीमीटर, so that would be 44 centimeters, so 10% बढ़ेगा. See, then let's see next question, that is if radius of a circle is increased by 20%,
देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो रेडियस ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सर्किल दिया है, सर्किल एंड रेडियस, रेडियस इज दिस वन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू सर्किल का आउटर। सो रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफ्रेंस क्या है सर्किल का, सर्किल का सर्कमफ्रेंस इज दिस वन, ठीक है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। दिस इज ऑल्सो व्हाट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज व्हाट, वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन है, ठीक है, इट इज वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन में, एक वन डायमेंशन में 20% इंक्रीज हुआ, दूसरे वन डायमेंशन चीज में भी इट विल बी 20% इंक्रीज। सो सर्किल का रेडियस 20% इंक्रीज हुआ। सो मान ले सर्किल का रेडियस है बढ़ गया, सो अब सर्कमफ्रेंस भी 20% इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर बाई सिंपल रूल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ इट, ठीक है। कोई भी वन डायमेंशन है, हो सकता है स्क्वेयर, रेक्टेंगल, कुछ भी है, कुछ भी चीज़ें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, बाकी वन डायमेंशनल चीज़ें उतने परसेंट इंक्रीज होंगे, ठीक है। चेंज इन वन डायमेंशन वाले लेंथ, डिस्टेंस, रेडियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड अदर वन डायमेंशन वुड चेंज बाय सेम परसेंट, दैट इज द सिंपल रूल, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर increased by 10% and 20% respectively. What will be the percentage increase in area of triangle? So now see, area of triangle में पूछ रहा है, ठीक है, area of triangle. So area is what, टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन, ठीक है। अब ये लेंथ एंड ब्रेथ आर वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन वन डायमेंशन। अब ये वन डायमेंशन होता, ठीक है, ये भी 10% एंड 20% इंक्रीज होता, ठीक है, बट एरिया इज टू डायमेंशनल। नाउ फॉर टू डायमेंशनल वी नीड टू सी द theory, so let's check, let's understand that, ठीक है। so put a heading that is, ठीक है, put a heading that is percentage increase or decrease in area, area is two dimension, ठीक है, area whenever we talk about area we talk about two dimension, that is centimeter square or meter square or kilometer square, ठीक है। we talk about, whenever we talk about area we talk about two dimension. so अब इसके लिए we use successive method, ठीक है, for that we use successive method, ठीक है। so let's understand the concept, ठीक है, concept समझते हैं, then we use successive method. so take rectangle, ठीक है, rectangle or anything square also you can take. so take a rectangle का length and breadth are not equal, right? so square में length and breadth are equal, so this is 20 centimeter length and breadth is 10 centimeter, ठीक है। so now we increase the length and breadth of a rectangle by 10%, ठीक है। so 10% increase हुआ, so if we increased 10%, so say it becomes 22 centimeter, because 10% of 20 is what, ठीक है। in first class we discussed 10% point लगाओ, 2% increase हुआ, ये 2% centimeters, then it will become 11 centimeter, ठीक है। so 10% is 1, 10% increased is 10 plus 1 is 11 centimeter, ठीक है। so then area is, so area of this rectangle is, area of rectangle is length into breadth, area of rectangle formula is length into breadth, then so length into breadth is, so length is 20 centimeter, ठीक है, into breadth is 10 centimeter, ठीक है। so it becomes 200 centimeter square, 200 centimeter square. then for this it is area is equal to length into breadth, so that is 22 centimeter into 11 centimeter, so this is 242
centimeter square. 242 centimeter square. Now percentage change in area what? Percentage change is what? Change is 42. ठीक है. So percentage change is equal to total change by original is 200. ठीक है. Original percentage into 100. ठीक है. So ये 0 cancel हो जाएगा and 42 divided by 2 is that is 21. So it is percentage change is 21%. 21% चेंज. ठीक है. अब देखो, ठीक है, पहले तो हम लेंथ एंड ब्रेथ वन डायमेंशनल में, ठीक है, एरिया इज टू डायमेंशनल. ठीक है, बट वन डायमेंशनल वी आर सेइंग, जैसे लेंथ एंड ब्रेथ में वन डायमेंशनल वी आर सेइंग भाई 20% इंक्रीज हुआ तो इधर भी 20% इंक्रीज होगा. बट हियर विथ 10% इंक्रीज, ठीक है, ये तो 10% ही किया ना हमने, 10% इंक्रीज किया. व्हाट परसेंटेज चेंज वी आर सीइंग इन एरिया. ठीक है, एरिया में कितने परसेंटेज चेंज दिख रहा है, एक से एक. सो दैट इज 21%. ठीक है, 21%. नाउ अब सक्सेसिव मेथड कैसे यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हर बार ये सब कैलकुलेशन करके नहीं कर सकता है. ठीक है, सो इट इज वेरी लेंथी. सो वी यूज सक्सेसिव मेथड. सो सक्सेसिव मेथड इज सक्सेसिव मेथड. So successive method is nothing but a formula we use, that is successive change is equal to a plus b plus ab divided by 100. ठीक है, a plus b plus a into b divided by 100. a plus b plus a into b divided by 100. ठीक है, this is successive method. ठीक है. अब सक्सेसिव मेथड का देखो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, सो ए इज व्हाट, बिकॉज वी इंक्रीज लेंथ, ठीक है, एंड वी इंक्रीज ब्रेथ. ठीक है, सो ए इज 10% इंक्रीज इन लेंथ. ठीक है, क्योंकि हमने 10% इंक्रीज किया. सो 10% इंक्रीज इन लेंथ प्लस 10% इंक्रीज इन ब्रेथ भी 10% इंक्रीज किया, प्लस 10% प्लस a into b. So a is 10 and b is also 10. So that is 10 into 10 divided by 100. ठीक है, so that is 10 plus 10 is 20 plus 10 into 10 is 100 divided by 100. 100 divided by 100 is 1. ठीक है, so 20 plus 1 is 21%. So successive change, instead of doing all these things, if we use successive method formula, then we get percentage change, that is 21%. ठीक है, 21%. Let's see questions, you will get more clarity. ठीक है, so here length and breadth of a rectangle are increased by 10% and 20% respectively. Then what will be the percentage increase in the area of rectangle? So area of rectangle is what? 2 dimension. So for 2 dimension change in area we use successive method. Right? So we use successive method. So length is increased by 10%. Successive method formula is a plus b plus a into b divided by 100. ठीक है, so a is length is increased by 10%. so 10%, ठीक है, 10% plus b is breadth, that is increased by 20%. 20% plus a into b, that is 10 into 20 divided by 100. ठीक है, that is 30%. 30 plus 200 divided by 100. So 102. So that is 32%. ठीक है, 30 plus 2 is 32%. So percentage increase in area of rectangle is 32%. So we use successive method to calculate this. अगर नहीं किया तो लेंथ देखना पड़ेगा भाई. लेंथ 10% इंक्रीज किया, सो लेट्स टेक लेंथ इज 100 एंड उसका 10% बढ़ाओ. ठीक है, या लेंथ 10 ले लो. ठीक है, जैसे लेंथ है, सो टेक 10 रेक्टेंगल का, ब्रेथ है टेक से अगेन 10. ठीक है, इंक्रीज इट बाय 10% एंड 20%. सो ये 10% 10 सेंटीमीटर 20% से होगा ये, सॉरी ये सेम भी नहीं हो सकता. सो 20 लेना पड़ेगा. सॉरी इधर 20 लेना पड़ेगा, इधर 10 लेना पड़ेगा. ब्रेथ वगैरह कुछ भी ले सकता है. ठीक है, जैसे मान ले इधर 10 ले लिया, ठीक, ये 20 ले लो. ठीक है, सो दिस वुड बी 22 सेंटीमीटर. अब इंक्रीज बाय 10%, तो
कितना एरिया कितना होगा, सो एरिया इज ए इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ करो, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो ये आ जाएगा, ठीक है, एरिया। सो फिर उसका परसेंटेज चेंज पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, जो इधर किया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस वी कैन सिंपली do the successive method to calculate successive method. So let's see one more question, you will get more clarity. That is, radius of a circle is increased by 300%, ठीक है, radius of a circle is, then its area will be increased by what percent, ठीक है। So circle radius is increased by 300%, ठीक है, that is a radius is one dimension, then area, its area is increased by, so area is two dimension, ठीक है, area of circle, that is area of circle is what, ठीक है, this one, this entire thing is area of circle, ठीक है, so area is always two dimension, ठीक है, so area of circle is increased by, so what we use successive method. So now successive method में अब radius है 300% दिया, ठीक है, now you can say sir we are not given value of b, ठीक है, so a plus b plus ab into 100, वी आर नॉट गिवन वैल्यू ऑफ b, तो वो कैसे करें। अब देखो भाई रेडियस ऑफ सर्किल ये है, ठीक है, रेडियस r है, इंक्रीज बाई 300%, अब दूसरा रेडियस ये है, ठीक है, सो दिस इज द b वैल्यू, ठीक है, एक रेडियस इंक्रीज किया तो एवरी रेडियस विल बी इंक्रीज, ठीक है, सो b विल बी दैट इज, अगर नहीं भी दिया तो 300% प्लस b इज ऑल्सो 300%, ठीक है, प्लस a इंटू बी दैट इज 300 इंटू 300 बाई 100, ठीक है, दैट इज 600 प्लस 300 इंटू 300, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 300 इंटू 3 इज 900, सो 600 प्लस 900 इज 1500% increase, 1500% increase, so option C is the answer, ठीक है, when circle radius is increased by 300%, its area will be increased by 1500% increase, ठीक है, 1500% increase, so this is the answer. So now let's move to next question, okay, so now see this is question asked in UPSC CSAT paper 2014, ठीक है, 2014 में क्वेश्चन है, सो लेट्स सी इट। सो ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%. The area of new garden is, ठीक है, the area of new garden is, अब देखो क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग एरिया, ठीक है, एंड लेंथ एंड ब्रेथ, सो लेंथ rectangular increase his rectangular garden, increase the area of his rectangular garden by increasing its length, so length is increasing, so a is a plus b plus ab by 100 is the formula, successive method, so length is increasing, ठीक है, that is 40%, now b is decreasing its width by 20%, so decreasing है we will take minus, ठीक है, so minus 20, ठीक है, सो a इज 40% बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, b डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाई 20%, ठीक है, लेंथ तो इंक्रीज कर रहा है बट विड्थ डिक्रीज कर रहा है, सो b इज माइनस 20%, ठीक है, सो अब फॉर्मूला लगा दो, दैट इज 40 माइनस b इज माइनस 20, दैट इज माइनस 20 प्लस a इज 40 इंटू b इज माइनस 20 बिकॉज b इज डिक्रीजिंग, ठीक है, बाई 100, ठीक है, सो 40 माइनस 20 इज 20, ठीक है, देन 40 इंटू 20, सो 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, दैट इज माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2, ठीक है, 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, ठीक है, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज माइनस 8, सो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12%, सो 12%, सो पॉजिटिव है, सो दैट इज 12% इंक्रीज, सो एरिया ऑफ द न्यू गार्डन हैज increased by 12%, area of new garden has increased by 12%, ठीक है, so that is the thing, has increased by 12%, ठीक है, so easy question है,
काफ़ी सिंपल सक्सेसिव मेथड फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है. सो डिक्रीज है तो नेगेटिव लेना है. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. ठीक है. सो दैट इज a radius of a hemisphere is increased, radius of a hemisphere is increased by 19%, then what will be the effect on total surface area and lateral surface area? Total surface area and lateral surface area. Okay. So now let's understand the basics of this question. See, hemisphere. Okay. Hemisphere. Okay. See, basically here we are understanding basics of geometry also. We are discussing about hemisphere etc. ठीक है. Hemisphere is what? Hemisphere is nothing but जैसे bowl है, ठीक है, कटोरी है, that is in the shape of hemisphere. Similarly जैसे cricket ball और football half cut, ठीक है, so that is in the form of hemisphere. ठीक है, that is in the form of hemisphere. So अब ball is like this, ठीक है, like this, ठीक है, it is like this. So question में दिया radius of hemisphere is increased by 19%. So radius of hemisphere is like this. ठीक है, जैसे ball है, ball के बीच में से वो जो कोने से वो लगाता है, so that will be the radius. So this will be the radius from center to the other end and this is another radius. ठीक है, so that is, ठीक है. So अब रेडियस इज इंक्रीज बाय 19%. सो ए 19% इंक्रीज हुआ और ए भी 19% इंक्रीज हुआ. ठीक है, अनदर रेडियस. ठीक है, सो रेडियस इज इंक्रीज बाय 19%. व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया? अब भाई एरिया का बात हो रही है, एरिया का. सो एरिया इज व्हाट? 2 डायमेंशन. सो इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. सो एरिया का तो व्हाट इज इट? सो वी विल यूज, ठीक है, सक्सेसिव मेथड, दैट इज a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100. ठीक है, सो 19, सो इंक्रीज हो रहा है, रेडियस हैज इंक्रीज टू, सो प्लस 19, प्लस 19. ठीक है, दिस रेडियस प्लस a इंटू बी, दैट इज 19 इंटू 19 बाई 100. ठीक है, 19 इंटू 19 बाई 100. सो दैट इज 38 प्लस 19 इंटू 19 बाई 100. so that would be 19 19s are 19 19 9 9s are 81, 9 1s are 9, 8 17, 1 9s are 9, 1 1s are 1, 1 6 361. So 361 by 100. So 361 by 100 is 3.61. ठीक है, 3.61, that is 41.61 percentage. So 41.61 percentage, 41.61 परसेंटेज इंक्रीज, पॉजिटिव है तो इंक्रीज आ जाएगा. ठीक है, सो अब नाउ वन थिंग इज वी नीड टू नो इज टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया आर सेम. ठीक है, सो यही चीज़ नोटिस करना है. सो दैट इज टोटल, सी नो नीड टू थिंक कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, बस हमें एरिया से मतलब है. एरिया इज 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में वी विल अप्लाई द सक्सेसिव मेथड फॉर्मूला. सो टोटल सरफेस area is equal to lateral surface area. ठीक है, so that's why they haven't given different. ठीक है, तो both are equal, so question हो गया. ठीक है, so ये हो गया हेमिस्फीयर. ठीक है, हेमिस्फीयर. then next thing is, see, radius and height of a cone are increased by 25%, then what will be the effect on total surface and lateral surface area? ठीक है, we have discussed by total surface area and lateral surface area are same, one and the same. ठीक है, जो भी होगा सेम ही होगा. then next thing is cone. cone क्या है? cone is the cone ice cream which we eat. so cone is in this shape, right? cone ice cream, so cone is this shape. ठीक है, so that is radius and height of a cone. so radius is from here to here. ठीक है, radius and height is from this point to this point. ठीक है, cone का edges तक है, so this is height. so height is increased by 20%. so this is basically lateral surface area, area का चाहिए, so that is 2 डायमेंशन.
ठीक है, एंड एरिया फॉर यू यूज फॉर्मूला a प्लस बी प्लस इंटू ए बी बाई 100 सक्सेसिव मेथड वी कैन यूज. सो रेडियस एंड हाइट आर increased by 25%. So radius be 25%, that is a, plus height is also 25%, that is b, plus a into b, that is 25 into 25 divided by 100. ठीक है, so that is 50% plus 25 into 25. ठीक है, that is 25 into 25 is 625. ठीक है, या 25 को काटो, दिस इज ones are and this is fours are. ठीक है, that is 25 by 4. 25 by 4 is also 6.25 or 625 by 100. 625 by 100 is also 6.25. So 50% plus 6.25%. So that is 56.25% is the change in total surface area and lateral surface area. So 56.25% increase. ठीक है, पॉजिटिव में, सब पॉजिटिव में, so increase होगा. So A is the answer, right? Okay, that's how we'll do. Now let's move to next question. That is, length of a rectangle is increased by 12% and breadth is decreased by 8%. So decreased आया, so ये negative आएगा. Then net effect on area. So area 2 dimension. ठीक है, so हमें 2 दिया हुआ है. So that is a plus b plus ab by 100. See, this is question asked in SSC CHSL 2020. ठीक है, so length of rectangle is increased, so a is increased, so ये 12%. ठीक है, and breadth is decreased by 8%, so b is minus 8, so minus 8% plus a into b, that is 12 into minus 8 divided by 100. सारे percentage terms में, so percentage, so 12 minus 8 is 4%. ठीक है, plus see here this would be minus, so 12 into 8, 12 into 8, 12 into 8 is what? 12 is a 96, that is minus 96 by 100. ठीक है, 4% minus 96 into 100, so minus 96. So 96 divided by 100 would be, ठीक है, पॉइंट माइनस 0.96. ठीक है, 2 जीरो से, सो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा, सो 0.096, दैट इज 4 माइनस 0.096 इज व्हाट? सो 4 इज नथिंग बट 4.00 माइनस 0.96, सो 9 इज इधर 10 है, सो 10 माइनस 1 बोरो किया, इफ वी बोरो 1 from here, so this is 10 minus 6 is 4, then here it is 9, इधर से borrow लेता है actually, so this would be 9, 9 minus 9 is 0 point, so 4 से एक आया तो that is 3, so 3.04%, 3.04%. ठीक है, so it is positive है, so positive is increase by 3.04%. ठीक है, so when we decrease we will take minus. ठीक है, so let's see next question, that is, length and breadth of a rectangle are made to increase and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in area? Area 2 dimension. ठीक है, so that we can use formula successive method. This is also question asked in SSC CGL 2022. So length and breadth are made to increase, length is increased by 8%, so 8. ठीक है, minus 10 because a decrease, breadth is decreased, so minus 10. ठीक है, plus a into b, that is 8 into minus 10. ठीक है, b is minus 10 divided by 100. अब 8 minus 10 is minus 2 minus 80 by 100. ठीक है, 8 into 10 is 80, so 0 0 cancel, then 10 by 8 is, so minus 2, 10 by 8 is minus 0.08, so minus 2 minus 0.08 is minus 2.8, so minus 2.8, so minus है, so it is decrease, so area is decreased. ठीक है, जब decrease है, so area is decreased by minus 2.8, so decreased by 2.8%, so decreased by 2.8%. ठीक है, decreased by 2.8%. ठीक है, so SSC CGL 2022 decreased by 2.8%.
Then next question is length, breadth and height of a cuboid is increased by 10%. ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम. देखो जैसे लेंथ एंड ब्रेथ वो हुआ, ठीक है, दैट इज 2 डायमेंशन. ठीक है, 2 डायमेंशन एंड वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज 3 डायमेंशन. ठीक है, वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल्सो टेकन ऑफ ए क्यूबॉइड. ठीक है, सो इंक्रीज बाई 10%. ठीक है, लेंथ 10%, 10%, 10%. नाउ 3 चीज आया. ठीक है, सक्सेसिव मेथड में वी यूज 2 थिंग्स, राइट. सो सक्सेसिव मेथड वी यूज 2 थिंग्स. अब 3 चीजों का क्या करें. ठीक है, सो 3 चीजों का क्या भाई, अगेन वी यूज सक्सेसिव मेथड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ एंड ब्रेथ एंड देन विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो लेट्स सी हाउ इट इज डन. सो चेंज. ठीक है, दिस इज 3. सो 3 डायमेंशन वी विल यूज सक्सेसिव मेथड फॉर 3. दैट इज फर्स्ट वी विल टेक लेंथ एंड ब्रेथ का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ठीक है, so then we can do other. So length and breadth, so length is increased by 10%. so 10 plus 10, ठीक है, plus 10 into 10 by 100. ठीक है, so this is for length and breadth. We are applying successive method. So this would be length and breadth increase किया तो we will get 10 plus 10 is 20 plus 100 by 100. So that is 1. ठीक है, सो 20 प्लस 1 इज 21%. सो लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज किया तो 21% हुआ. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ सो वी गॉट लेंथ एंड ब्रेथ का. नाउ वी विल टेक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का, लेंथ एंड ब्रेथ का वी गॉट. सो दिस विल बी आवर ए. ठीक है, दिस विल बी आवर ए एंड हाइट इज 10% इंक्रीज हुआ. सो दिस विल बी हाइट 10% विल बी आवर न्यू बी. ठीक है, सो अब लगा दो. सो दैट इज ए इज 21 प्लस बी इज 10%. 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, सो 21 प्लस 10 इज 31 प्लस 210 बाई 100. ठीक है, सो 0 0 कैंसिल. सो 31 प्लस 2.1. ठीक है, सो दैट इज 31 प्लस 31 2.1. so that is 0 3 3. so 33 point, सॉरी ये 1 है. ठीक है, 30.1. सो ये 1 हो गया ना. सो दैट इज 33.1%. सो 33.1% इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 33.1%. so for 3 things also we can use successive method, but we need to use twice. ठीक है, for 3 things also we can use successive percent. एक बार उससे रिजल्ट आ गया, देन with respect to that we will use, so successive percent change we will get 33.33% increase. Now let's see next question. That is length of a cuboid is increased by 20%, breadth is increased by 30%, height is decreased by 50%. ठीक है, height is effect on volume. So volume is 3 dimension. ठीक है, it is measured in 3 things. So successive 3 dimension successive method we need to use 2 times successive method. So first let's see with length and breadth. So length of a cuboid is increased, so that is 20%. ठीक है, increased है तो plus 20 and breadth is increased by 30%. so plus 30 plus 20 into 30 a into b, 20 into 30 divided by 100. so that is 20 plus 30 is 50 plus 20 into 30 is 2 3 is 600 by 100. so 0 zeros cancel, so 6. so 50 plus 6 is 56%. so लेंथ एंड ब्रेथ किया 56% पॉजिटिव है तो 56% इंक्रीज हुआ. ठीक है, दिस इज फॉर लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, नाउ लेंथ एंड ब्रेथ हो गया. सो नाउ हाइट इज ऑल्सो टेकन. सो नाउ सेकेंड इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का. ठीक है, सो लेंथ एंड ब्रेथ एक एंड हाइट का सक्सेसिव मेथड. सो दैट इज 56 प्लस हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 50%. सो डिक्रीज्ड है वी विल टेक माइनस. ठीक है, सो फॉर डिक्रीज्ड वी विल टेक minus. So minus 50%, minus 50 plus a into b, that is 56 into minus 50 because decreased by 100.
ठीक है. So this is 56 minus, so 6 plus so 56, so this is 51s are and 52s are and 2 28s are. So this is minus idhar ka bacha, so minus 28. So minus 28 is left out, so minus 28, that is 6 minus 28. So that would be minus 28 minus bada, so 6 positive, so that would be 22 minus 22. ठीक है, माइनस 20 से 6 निकाला, सो माइनस 22. सो माइनस 22 मीन्स माइनस सिंबल डिक्रीज. सो वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 22%. so decrease by 22%. so when we do this, the effect on volume is it decreases by 22% decrease. ठीक है. so तीन चीज आया. so successive method we need to apply twice. Okay, so that is the thing. Now let's see question asked in UPSC CSAT paper 2022. UPSC CSAT 2022 paper. Okay, recent paper. So that is increase in price of a certain item was 25%, then price was decreased by 20% and then again increased by 10%. what is the resultant increase in the price? ठीक है. अब देखो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट सक्सेसिव. तीन बार. ठीक है, एक बार इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, देन प्राइस वाज डिक्रीज्ड, once decreased and again increased by 10%. so this is what successive. so successive what, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, मतलब लगातार इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है. सो दैट इज सक्सेसिव. सो सक्सेसिव में तीन टाइम हो रहा है. सो वी विल यूज सक्सेसिव मेथड ट्वाइस. सो नाउ फर्स्ट से, so first that is price of certain item is increase in price was 25%. so that is 25 plus then price was decreased by 20%. so decreased B is minus 20. so decreased A, so we'll take minus 20. ठीक है, A plus A into B, that is 25 into minus 20 divided by 100. ठीक है, divided by 100. so A 4 and 4 5s are. ठीक है, so that is 20 minus 25 minus 20, 25 minus 20 is 5 A बचा हुआ A minus 5 है. so 5 minus 5 is 0%. so फर्स्ट टू एक्सप्रेशन का आ गया बाई 0% चेंज. ठीक है, देन नेक्स्ट सक्सेसिव इज विथ रिस्पेक्ट टू 0. ठीक है, सो ए वुड बी 0 एंड बी वुड बी 10%. सो ए इंक्रीज्ड है, सो 0% प्लस 10%. ठीक है, प्लस 0 इंटू 10 बाई 100. ठीक है, ए इंक्रीज्ड है इसलिए प्लस ले लिया. ठीक है, सो दिस इज 0 इंटू 10 इज 0 बाई 100 इज 0. तो इस एक्सप्रेशन का पूरा 0 हो जाएगा एंड ये 0 है, बचा हुआ 10 है. ठीक है, सो बचा हुआ 10%. सो एंटायर एंड इज 10%. सो 10% पॉजिटिव 10 है, सो इंक्रीज. सो रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्राइस दिया हुआ, सो रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्राइस इज 10%. ठीक है, वेरी सिंपल. ठीक है, वेरी इजी. ठीक है, सो दिस कैन बी डन. सक्सेसिव इंक्रीज, सो इंक्रीज डिक्रीज ऐसा तीन बार हो रहा है, देन ऑल्सो वी कैन यूज सक्सेसिव मेथड. सो दिस इज, सो नाउ लेट्स सी अनदर मेथड, दैट इज सेकेंड मेथड. ठीक है, सेकेंड मेथड बाय यूजिंग सक्सेसिव. ये पता भी नहीं है, ये फॉर्मूला भी नहीं पता है, देन ऑल्सो वी कैन सॉल्व. दैट इज से प्राइस ऑफ ए item, price of an item was increase in price of item by 20%. let's take let price is equal to 100. ठीक है, let price of something is 100. now increase in price of certain item was 25%. so 25% increase. ठीक है, that is 25% of 100. ठीक है, 25% increase हुआ, so 25% of 100 is what, 25. so 25 increase हुआ, so now the price is 125. ठीक है, 25% इंक्रीज, 25% ऑफ 100 जो प्राइस है उसका 25% इंक्रीज हुआ, सो 25 इंक्रीज हुआ, तो नाउ आफ्टर 25%, सो नाउ द प्राइस इज 125. ठीक है, 125. नाउ देन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%. सो नाउ इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%.
that is what 20% of 125. So 20% of 125. So that is 20% of 125 is what 20 by 100 into 125, और सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 10% इज 12.5 एंड 20% इज 25 रुपीज. सो 12, सो दिस इज 20 by 100, 0 0 कैंसिल. ठीक है. सो 1 जार 5 जार. सो 125 by 5 is 5, 2 जार 10, so 20 जार. So this is 20 rupees. So 20 डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बाय सॉरी ये 25 जार, 5 25 जार, राइट. सो 5 25 जार. सो डिक्रीज बाय 20% इज 25. सो 125 माइनस 125 माइनस 25, 125 माइनस 25 आ जाएगा. सो दैट वुड बी 100. ठीक है. ठीक है. डिक्रीज बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज बाय 10%. सो इस 100 से अगेन इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%. सो 10% ऑफ 100. ठीक है. दैट इज 10% ऑफ 100. ठीक है. 10% ऑफ 100 इज व्हाट 10. ठीक है. 10. सो 10 इंक्रीज हुआ. सो 10 100 प्लस 10 इज 110. सो अब हो गया 110 आ गया. ठीक है. देन द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस. ठीक है भाई, ओरिजिनल प्राइस 10 है. सो 10 से 110 आ गया. सो रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हुआ, दैट इज रिजल्टेंट इंक्रीज इज 10%. ठीक है. सो दैट इज 100 प्लस 10% ऑफ 100 इज व्हाट 10% इज 10, 110. ठीक है. सो रिजल्टेंट इंक्रीज इज 10%. सो 100 प्लस 10, सो दैट इज 110. ठीक है. 100 प्लस 10, 10% ऑफ 100. सो रिजल्टेंट इंक्रीज इज 10%. ठीक है. सो 10% रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सी 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा है एंड अगेन 2022 में यूपीएससी हैज आस्क्ड सेम मेथड ऑफ क्वेश्चन. सो लेट्स सॉल्व. So if price of an article is decreased by 20%, then new price is increased by 25%. What is the net change in price? ठीक है. So price of article is decreased. Successive change we can use. So decreased, that is minus 20. ठीक है. Then the new price is increased by 25% plus 25 plus A into B. So that is minus 20 into 25 divided by 100. ठीक है. Divided by 100. So here it is 20 minus 20 plus 25. So that is 5 plus minus 20 into 25. ठीक है. ये करो 25 4s are and 4 5s are 20. So this is minus 5. So minus 5 plus 5. ठीक है. कैंसिल हो जाएगा. So 0. Minus 5 plus 5 is 0. So 0%. Net change in the price is 0%. ठीक है. So 0% is the answer. So नहीं तो ये सेकेंड मेथड सिंपल वे में विदाउट यूजिंग सक्सेसिव मेथड भी वी कैन कैलकुलेट. दैट इज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%. सो लेट्स टेक लेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100. ठीक है. ₹100. ठीक है. नाउ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%. ठीक है. ये डिक्रीज्ड बाय 20%. ठीक है. decreased by 20%. decreased by 20%. ठीक है. so that is 20% of 100, 20% of 100. so 20% of 100 is what 20. ठीक है. by 10% है 10 into 2 is 20%. so 20% is 100. now decreased by 20%. so that is 100 minus 20 is equal to 80. ठीक है. so now after decreasing it by 20%, so down to the price is ₹80. now then the new price is increased by 25%. इसको 25% increased. so increased by 25%. increased by 25%. so that is 25% of 25% of 80. ठीक है. that is 25 by 100 into 80. ठीक है. so ये हो गया 1s are 4s are and 4 2 0. so 20s are. so this is
20, so increased by 20 rupees, that is 80 से plus 20% of 80, ठीक है. So that is 20 increase हुआ, so resultant would be 100, ठीक है. Resultant is 100. So net change in the price is by 100 से net change है 100 से 100 आ गया, कुछ change ही नहीं है, so 0% change, ठीक है. So this is the answer. काफ़ी ईजी है, ये मेथड भी काफ़ी ईजी है, ठीक है. बट अगर सक्सेसिव मेथड है तो सक्सेसिव मेथड से करो, नहीं है तो इससे करो. बट क्वेश्चन इज हो रहा है, तो जहाँ भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वेदर इट इज 2 times और 3 times, सो फॉर 3 times यू नीड टू यूज सक्सेसिव मेथड ट्वाइस, ठीक है, ठीक है. देन 2 times यू नीड टू यूज ओनली 1 time. अगर नॉर्मल मेथड है तो लेट एज्यूम एंड सॉल्व द परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द थिंग. नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन asked in SSC CPO. See, this is asked in SSC CPO exam of 2020. See, I am doing SSC level questions which are relevant for UPSC, ठीक है. We are solving SSC exam questions, UPSC CAPF exam questions, UPSC CDS exam questions. So question is, a number first increased by 40% and then decreased by 25%, again increased by 15% and then decreased by 20%. What is the net increase or decrease percent in the number, ठीक है. सो नंबर इंक्रीज्ड बाई, ये अब दिया हुआ बाई 1 2 3 4 times. So now we need to do successive thing for 3 times. So first successive thing is increased by 40%, so 40, ठीक है. then decreased by 25%, so minus 25, ठीक है. फर्स्ट और सेकेंड का कर रहा है, प्लस 40 इंटू माइनस 25 बाई 100, ठीक है. सो 4 जार, सो 4 ये 10 जार, ठीक है. सो 10 minus 10, so 40 minus 25 is 15 minus 10 minus 10, so 15 minus 10 is 5, ठीक है. सो 5% इनका पूरा रिजल्टेंट आ गया फर्स्ट का, ठीक है. सो नाउ सेकेंड इज ये हो जाएगा, सो दैट इज 5. नाउ सेकेंड वन इज ये 2 हो गया, सो अगेन इंक्रीज बाई 15%, सो दिस वुड बी प्लस 15, ठीक है. प्लस 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है. सो 5 प्लस 15 इज 20 प्लस 5 5 से कैंसिल करते थे, सो दैट इज 5 1s are and 5 20s are and 5 4s are and 5 3s are, so that is 3 by 4. So 3 by 4 is what, 0.75, so this is 20.75, ठीक है. इसका 20.75% आ गया, ठीक है. देन आता है थर्ड, ठीक है. सेकेंड थर्ड इज इंक्रीज एंड देन डिक्रीज्ड बाई, सो ये इंक्रीज आ गया, पॉजिटिव में आ गया, सो देन डिक्रीज्ड बाई 20%, ये बचा हुआ, सो दैट इज 20.75 डिक्रीज्ड बाई 20%, माइनस 20 प्लस 20.75 इंटू माइनस 20 बाई 100, माइनस 20 बाई 100, ठीक है. सो नाउ इट इज 20.75 माइनस 20 इज 0.75 माइनस, सो 20 ये 25 जार हो गया, ठीक है. एंड इफ यू डू इट, सो दिस वुड बी, नाउ यू कैन टेक इट एज, सो ये माइनस बचा है, सो माइनस 20 इंटू 20.75 बाई 5 है, ठीक है. सो दिस कैन बी, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर नीचे, सो 0.75 माइनस 2075 डिवाइडेड बाई 500. सो इफ़ यू डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है, सो 500 डिवाइडेड बाई 2075, ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए किया. सो 500 4s are 2000, सो दैट वुड बी 2000, सो 75 आ गया, सो 75, सो 500 0, सो पॉइंट लगा दिया, सो 500 1s are 500, सो दिस इज 250 पॉइंट लगाते हो, सो 0, सो 500 इंटू 5 इज
2500, ठीक है. सो ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर. सो दिस वुड बी 0.75 माइनस 4.15, ठीक है. सो दैट वुड बी माइनस है. सो माइनस this is 0.4 minus 4, so this would be minus 3.4%. 3.4%, 3 point कुछ आएगा 3.4, so it is decrease. so minus sign is decrease. so basically कितने बार दिया है उतने बार successive method use करके we can write, ठीक है. अगर नहीं है so second method also we can use, ठीक है. second method that is say a number, ठीक है. a number let's do with this. so a number is increased by 40%, so let number be 100, ठीक है. 100, let the number be 100, ठीक है. increased by 40%, ठीक है. increased by 40%, increased by 40%, ठीक है. 40% of number is 40, so ये हो गया 140. then decreased by 25%, ठीक है. ये decreased by 25%, decreased by 25%. so 140 का 25%, that is 25 by 100 into 140. so 0 0 cancel और 5 5s are and 5 2s are, so 14 into 5 by 2 ए 7 हो गया, ठीक है. so 7 into 5 is 7 5s are 35, ठीक है. so 35 140 plus, so decreased है, decreased means minus, ठीक है. minus, so 140 minus 35, ठीक है. 140 minus 35 that is 105, so decreased, ठीक है. that is minus 25, so minus 35 आएगा, ठीक है. then next is decreased by 25%, again increased by 15%. so now either increased by 15%, ठीक है. increased by 15%, so 15% of 105, 15 by 100 into 105, ठीक है. या तो 10% लेके भी ऐसा भी कर सकता है. so what you get is 15%, ये 5 3s are and 5 20s are, then 5 4s are and 5 21s are, so that is 21 into 3 by 4, so 21 into 3 by 4, so 21 3s are 3, 3 2s are 6, 6 divided by 4, 63 divided by 4, so if it is 63, 4 1s are 4, 2 3 4 5s are 20, so 3.0, so 4 7s are 28, then 2 0, so that is 4 5s are 20, so 0, so that is 15.75, so increased है. so 105 plus 15.75, so that is 7510, ठीक है, to 120.75, 120.75, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन देन डिक्रीज्ड बाय 20%, सो 20% इज, ठीक है, डिक्रीज बाय 20%, सो माइनस 20% ऑफ 120, 20% ऑफ 120, सो माइनस 20%, ठीक है. सो 20% ऑफ 120.75, सो 10% इज 10% इज, ठीक है, जैसे 20 बाई 100 इंटू 120.75 करते हैं, ठीक है. 125 ज़ार, सो 120.75 बाई 5, सो ये दोनों 100 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज़ 12075 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है. ये बड़ा नंबर हो जाएगा इफ वी डू इट, सो वील गेट माइनस, लेट्स सॉल्व इट. so 500 divided by 12075, so 500 4s are 1000, then 2075, so sorry 2s are right, 2s are 500 2s are 1000, then 500 4s are 2000, फिर ये हो गया 75 पॉइंट लगा दो, 0.00, 2 zeros if you take 0.5, then
सॉरी 0.0 लगा दो, एक ही ज़ीरो, 750.1 is 500, देन इट इज़ 250 पॉइंट लगाए थे और ज़ीरो, देन 5 जार 2500, so remainder 0, that is 24.15 आया. So this is decreased by 20%. So 120 minus 120.75 minus 24.15. So this is 550, 6 minus 1, 7 minus 1 is 6, point 10 minus 4 is 6, then 11 minus 2 is 9. So that is 96.60. ठीक है. अब रिजल्टेंट क्या है? So from here to here 100 to 96.60. So that is 3.4% decrease, right? 3.4% decrease. ठीक है. अब देखो 3 नंबर डिक्रीज हुआ, so that is 3% of 100, so that is 3.4% decrease. This is the option. So दोनों मेथड से we can solve, सक्सेसिव मेथड और द नॉर्मल मेथड. ठीक है. इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया, दैट्स इट, बट ईजी है. दीज आर ईजी क्वेश्चंस, वी कैन ईजिली सॉल्व. देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज्ड बाई 50%. ठीक है. सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाई 50% एंड अगेन इंक्रीज्ड बाई 100%. हाउ मच परसेंटेज डज ही लूज और गेन? सो सक्सेसिव मेथड से decreased by 50%, that is minus 50, and subsequently increased by 50%, that is plus 50. ठीक है. प्लस minus 50 into 50 by 100, so plus minus cancel, then minus 0 0 0 0 cancel, that is minus 25%. ठीक है. फर्स्ट का रिजल्टेंट है -25 आ गया. ठीक है. देन सेकेंड का अगेन इंक्रीज बाय 100%, सो ये हो गया ये, सो दैट इज -25 प्लस इंक्रीज्ड है, सो प्लस 100 प्लस -25 इंटू 100 बाई 100. ठीक है. सो 100 कैंसिल. ठीक है. दैट इज -100 minus 25 is 75 and ये -25, so -25, so that is 75 minus 25 is 50%. ठीक है. 50 या 50%. so how much does he lose or gain? so he gains 50% because positive है, so gain of 50% is happening. so now let's use second method, that is a person's salary, let's say salary is 100. ठीक है. salary is 100, salary was decreased by 50%, so decreased by 50%, so 50% of 100 is 50, so 50 decrease हुआ तो 50 हो गया अभी नॉर्मल सैलरी. then subsequently increased by 50%, so 50% of 50, so 10% is 5 and 50% is 25, so 25% increase हुआ है. ठीक है. 25 रुपीज़. ठीक है. 50% is 25, so 50 plus 25 is 75. I am directly doing it. ठीक है. 70, then again increased by 100%, so 75 का again increased by 100%, 100% is 75, so 75 plus 75 is 150. ठीक है. 150 what percentage or did he gain? so 100 से by 150 आ गया, so this is what 50%, so 100 plus 50% of 100. ठीक है. that is 50, so 100 plus 50 is 150, so 50% gain हुआ overall from here to here. ठीक है. how much percentage that is lose or gain? ठीक है. that is 50% gain. ठीक है. so this is second method. so any method we can use, so that's it. so these are the questions and we can use successive method or normal method to solve. ठीक है. successive method is very easy, calculation भी easy हो जाएगा. so ये है, that's it for today's class. so this is class 30 and part 3. so we'll be having 2 or 3 more classes on percentage. 3 classes होंगे on percentage. okay. so that's it for today's class. thank you very much. bye.